Hi everyone. So finally I've made the YouTube channel I was planning since ages. In this channel I will be sharing design ideas, art and craft ideas and my design process. I have a small pop shop named Hookah. The link is in the description. आप मेरे आर्ट को वहाँ से खरीद भी सकते हैं. But in this video I'm going to try something new जो मैंने कभी नहीं try किया है. That is super clay. Why super clay? Because I wanted to try something new and I wanted a cost efficient clay to work with my imagination जिससे मैं सब कुछ बना सकूँ जिसमें ज़्यादा hassle ना हो कलर्स एंड ऑल करने का और जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाए. आई थिंक सुपर क्ले इज़ मेरे रिसर्च के हिसाब से इज़ द बेस्ट क्ले फॉर दैट एंड इज़ नोन फॉर दैट. So today we are going to explore super clay. And if you have any ideas and design recommendation you want me to try with super clay, please let me know in the comment section. So let's get started. So I got this clay from Amazon and I have given the link in the description. To begin with, I am making avocado and for that this is the brown color and I'm mixing it with white because avocado का base थोड़ा सा light होता है. ओवरऑल इसके साथ वर्क करना इजी है इफ़ यू आर यूजिंग टैल्कम पाउडर, अदरवाइज़ ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ग्रीन कलर and we are gonna make a sleek pipe of it and surround it with the base of our avocado. Because I want this whole design to be a bit poppy, that's why I'm using this poppy green. मेरे सारे डिज़ाइन यूजुअली पॉप कलर के होते हैं. यू कैन गो चेक आउट माई स्टोर राइट अवे एंड सी इफ़ यू लाइक एनीथिंग. सारे कूल क्वर्की एंड पॉप स्टाइल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे. इफ़ यू वांट मी टू मेक द प्रोसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर डिज़ाइन डू लेट मी नो. आई विल डेफिनेटली कवर इट इन अनदर वीडियो. ओवरऑल आवर डिज़ाइन इज़ लुकिंग रियली क्यूट बट इसको सील करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ वार्निश. दिस इज़ द बेस्ट वार्निश आई फाउंड ऑन इंटरनेट. ये सूख गया है so now I'm going to put jump rings and I think this is so pretty, so beautiful. It came out really well. It is very lightweight and the texture is very spongy. It looks like, feels like I've made it with just thermocol. If you have an art business you can definitely try accessories with super clay. And if you want me to try something new, if you want more ideas, do let me know in the comment section. I will love to try it. Thanks for watching. See you in the next one.